Hello students, I am going to continue with the new chapter of the 11th science, that is sequence and series. In previous lecture we learned about the complex numbers, exercise 1.4, and we learned about the question number 5, and question number 6, 7 and 8 is deleted from this year's syllabus. So I am going to start with the new chapter, that is sequence and series. So this chapter consists of the main two parts, that is AP and GP, that is arithmetic progression and geometric progression. So in 10th standard you already learned about the arithmetic progression. Just I am going to revise it. If you are given the example like this way, that is 2, 5, 8 and 11. So you already know that this the first term is denoted by T1, second is by T2 and third T3 and so on, and the last term is Tn. So in this type of examples we already see that is the difference between the two consecutive term is always constant, that is a T2 minus T1. If we find out the T2 minus T1, that is here in this example there is 3, then T3 minus T2, it is also 3, 11 minus 8, that is T4 minus T3. So all these answers will be same, and it is constant, and here the first term, that is T1, is also called as A. In this example it is 2. So T1, that is first term, is also denoted by A, and you know that is this common difference which is same for each one, that is T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3, it is constant, and this common difference is denoted by small d, which is nothing but 3. You already learned this formula to find out the Tn, that is the general term, that is Tn is equals to A plus n minus 1 into d, and the sum of the terms means if we are given that is 2, 5, 8, 11 and so on, and if we have to find out the sum of these 4 terms, sum of first 4 terms, then you use this formula, that is Sn is equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. So this is the formula for the to find the sum of the n number of terms. This formula we can also write like this way, that is n by 2. This 2a we can split like this way, that is a plus a in bracket plus n minus 1 into d. So you know that is a plus n minus 1 into d is nothing but Tn, and a is the first term, that is T1. So this formula is also, that is Sn का ये जो formula है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. Both are the same. जो भी एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप का फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज़ करेंगे. अगर आपको एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया है, दैट इज T1 एंड Tn, देन वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. अगर आपको डिफरेंस दिया है, n दिया है और a दिया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड यू ऑलरेडी लर्न इट इन द 10th standard. Then next is about the geometric progression. So what is the difference between these two? So if we are given the example like this way, that is 2, 4, 8, 16, 32 and so on. Again same here, the first term is denoted by T1, T2, T3, T4, T5 and so on, that is Tn. Here we take the ratio of the two consecutive terms, that is T2 upon T1, T3 upon T2, T4 upon T3, T5 upon T4, and we find it, that is it is constant. That is, if we take 4 upon 2, that is 2, 8 upon 4, it is also 2, 16 upon 8, 2, 32 upon 16 is also 2, and so this ratio we get as a constant. And जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिखा था कि वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, वैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है. R इज़ नथिंग बट द रेशियो. यहाँ पे जो हमें रेशियो मिला वो क्या है, 2. कॉमन रेशियो इज़ 2. एंड सिमिलर टू दैट ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म a से दिखाते थे, वैसे यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म वी डिनोटेड बाय a इज इक्वल्स टू 2. Now we're taking one more example, that is 1, 3, 9, 27, 28. So हम ऐसे भी कर सकते हैं, that is 1 into 3, 3 into 3, 9 into 3, 27 into 3, or just like that is the ratio, that is T2 upon T1 and T3 upon T2. We find it by both the ways. Here we get that is 3, and so R is equals to 3 and A is equals to 1. A, that is first term here, is 1. So similar to that of the formula of Tn, the formula of Tn in geometric progression is given by Tn is equals to A into R raised to n minus 1, where R is the common ratio, A is the first term,
and n is the number of terms. So Tn is equals to a into r raised to n minus 1. And for the sum of n number of terms, the formula is Sn is equals to a into bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1. There are two formulae for the sum of terms. Sn is equals to a into bracket 1 minus r raised to n upon 1 minus r. तो ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है और ये कहाँ पे यूज़ करना है? ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वेन एवर द वैल्यू ऑफ आर इज़ ग्रेटर देन 1. आर जब 1 से बड़ा होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और वहाँ पे आर पहले लिखते हैं हम 1 से पहले, बिकॉज आर इज़ ग्रेटर देन 1. एंड यहाँ पे ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब आर की वैल्यू 1 से कम होती है, मतलब 1 बड़ा है और आर छोटा है, तो आर बाद में लिखते हैं. एंड द कंडीशन फॉर बोथ दैट इज आर मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1. आर इज़ नॉट इक्वल्स टू 1. अगर 1 होगा तो वो 0 आ जाएगा. सो रिमेंबर दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर एस टू n माइनस 1. एंड Sn के जो दो फॉर्मूले हैं, दैट इज a इंटू आर एस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 when r is greater than 1. And second one, that is Sn is equals to a into 1 minus r is to n upon 1 minus r when r is less than 1. So ये जो फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूला हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 इज रिलेटेड टू द फॉर्मूला दैट इज Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर एस टू n माइनस 1. 2.1 की जो एक्सरसाइज है तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है उसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, और 2.2 जो है उसमें हम ये दो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं. तो ये जो पार्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो हम थोड़ा सा केयरफुली सीखेंगे क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पहले से ही सीखा हुआ है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी द एग्जाम्पल्स विच आर रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. थैंक यू.